plant biotechnology to increase food yield. So one of the main goal of plant biotechnology is to increase the food yield of the crops, कि किसी तरीके से इनकी yield को enhance किया जाए. And again, the transgenic plants, they may be a valuable source. So traditionally, it has been managed by different activities like to manage the soil, crop rotation, or to produce some varieties by natural breeding that can increase or have the ability to express high yields. But gene manipulation again, it can be used not only to control the yield losses, but the intrinsic ability of the crops, it can be managed so that increased yield is there. Now, with reference to yield losses, what we can do, how it can be managed. Now, in the last topics, we have discussed different strategies that to control the pests, that is different weeds or insects that can cause the damage to the crops. Like weed elimination can be managed by targeting some specific metabolic characteristics. In addition to that, insects can be controlled by transferring certain genes that produce harmful effects within the plant tissue so that insects may not be able to grow. Then environmental factors can be managed. So crop ability to mediate or to resist against variety of environmental stresses that included the drought or even the salt stress. It can be enhanced ताकि ये ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करें ये जो एबायोटिक स्ट्रेस हैं इनके अगेंस्ट. तो इस तरह से जो यील्ड लॉसेस होते हैं पौधों की बीमारियों की वजह से या पेस्ट अटैक्स से या खुश्क साली से या हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन से, तो इस तरह से हम यील्ड लॉसेस को मैनेज कर सकते हैं. इसके अलावा हम प्लांट की एबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि उनकी यील्ड जो है वो इन्हेंस हो जाए. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट metabolic pathway, it is the photosynthesis. Photosynthesis, it can be targeted because it is the main process that can fix the carbon dioxide into fixed form or carbohydrate. And here the phytochromes, that is light harvesting pigments, they can be targeted. But in addition to that, certain other enzymes, they may also be the target so that there may be increased fixation of carbon dioxide. बॉटनिस्ट या प्लांट साइंटिस्ट जो हैं प्लांट्स को इस तरह से भी डिवाइड करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान इनमें C3 पाथवे ऑपरेट कर रहा है जिसमें कुछ 3 कार्बन एसिटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं या C4 कुछ कंपाउंड्स बनते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन. तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो C3 प्लांट्स हैं जिसमें आफ्टर फोटोसिंथेसिस 3 कार्बन कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो ये जो C3 प्लांट्स हैं ये देखा गया कि इनका जो फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है ये उतना एफिशिएंट नहीं है जितना कि C4 प्लांट्स का है जिसमें फोटोसिंथेसिस के नतीजे में 4 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं. C3 प्लांट्स के इनएफिशिएंट फोटोसिंथेसिस होने की वजह ये है कि इसमें फोटो रेस्पिरेशन भी हो जाती है जिससे कार्बन लॉसेस होते हैं, जबकि C4 में ये सिचुएशन उतनी ड्रास्टिक नहीं होती. तो इसलिए ये कोशिश की गई कि जो C4 पाथवे के जो एंजाइम्स हैं जिसमें PEPC जो एंजाइम है इसको क्लोन कर दिया जाए या ट्रांसफ़र कर दिया जाए C3 प्लांट्स में ताकि इनकी जो कार्बन फिक्सेशन की जो एफिशिएंसी है उसको इन्हेंस किया जाए. अब C4 प्लांट्स में जो एंजाइम है वो है फास्फोइनोइल पायरुवेट
कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम जो है इसकी कार्बन फिक्सेशन की एफिशिएंसी हाई है। तो कुछ जो प्लांट्स थे C4 लाइक मेज, उनका ये PEPC जो जीन है इसको जो C3 प्लांट्स हैं लाइक राइस या मेज, राइस या पोटैटो, वो मेज से लेके इसमें शिफ्ट किया गया और ये देखा गया कि इनकी जो efficiency है for high crop yield, it was increased. So in this way the photosynthetic pathway or even other metabolic pathway or hormones, they can be targeted to get high yield of crops.